हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन एंड MVVM व्यू मॉडल फॉर .NET MAUI। तो सबसे पहले हम पता करते हैं व्हाट इज़ MVVM पैटर्न। ओके, सो मॉडल व्यू मॉडल क्या होता है। यदि हम बात करें मॉडल व्यू मॉडल की, तो ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यू होता है, एक व्यू मॉडल और एक होता है मॉडल। व्यू क्या होता है? व्यू जैसे कि पेज, एप्लीकेशन में पेज होता है, राइट। सो विल गो बैक हियर our solution explorer. So we have a multiple segments. Okay, तो यू कैन सी, आप देख सकते हो ये पेज है, राइट। सो ये पेज जो भी कोड हमने XAML का लिखा है, XAML का, वो सब आएगा व्यू के अंदर, व्यू कंटेनर में। ठीक है, अब व्यू किससे कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा? व्यू मॉडल से, ना कि सर्विस से, ना कि रिपोजिटरी से डायरेक्ट। तो व्यू मॉडल के अंदर में हमें एक लॉजिक लिखना है जो किसको अपडेट करेगा? व्यू को। मतलब एक व्यू के पास एक व्यू मॉडल होता है। ठीक है, दैट इज़ अ आइडल, और होना भी चाहिए क्योंकि व्यू मॉडल का काम क्या है? व्यू को अपडेट करना। व्यू डायरेक्ट मॉडल से कम्युनिकेट नहीं करेगा, व्यू मॉडल से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, और व्यू मॉडल किससे कम्युनिकेट करेगा? व्यू मॉडल बिजनेस लेयर से। आई मीन टू से वी हैव अ सर्विस कॉल, हमारे पास रिपोजिटरी है, सर्विस है, ये पूरे लॉजिक्स किसके अंदर होंगे? व्यू मॉडल के। ठीक है, तो हम व्यू मॉडल से लोकल डीबी कॉल करेंगे। ठीक है, हो सकता है हम सर्विस भी कॉल करें। ठीक है, तो जितना भी हमें लॉजिक लिखना है वो सब हमारा व्यू मॉडल से रिलेट होगा। व्यू मॉडल कम्युनिकेट करेगा सर्विस से, रिपोजिटरी से, बट नॉट व्यू से। उसका फ़ायदा क्या है? पहले फ़ायदा ये है कि यदि मुझे कल को व्यू चेंज करना है, हो सकता है कि व्यू में कुछ चेंजेस आ गए, तो विदाउट, ओके, मुझे पता है यूज़र नेम, लेट सपोज हमारे पास यूज़र नेम है और यूज़र फ़ोन नंबर है व्यू में, और उसका लॉजिक लिखा है मैंने व्यू मॉडल में। ठीक है, और उसे मैं कहाँ से ले रहा हूँ? सर्विस हिट करके यूज़र का नाम और फ़ोन नंबर ले रहा हूँ, और वो जो यूज़र का नाम और फ़ोन नंबर है वो सब मॉडल के अंदर है। ठीक है, टेबल, सर्विस, एंटिटी, वो सब मॉडल में आएगी। तो अभी क्या हो रहा है कि जब भी मैं व्यू मॉडल, यूज़र का नाम और फ़ोन नंबर लेना होता है, राइट, तो व्यू मॉडल हिट होता है, व्यू मॉडल व्यू को अपडेट करता है डेटा के साथ। यदि कल को मुझे व्यू नेम की जगह और व्यू नेम और यूज़र नेम और फ़ोन नंबर के अलावा मुझे ईमेल आईडी चाहिए, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ ईमेल आईडी लिख दूँगा और मॉडल में ईमेल आईडी डाल दूँगा, राइट। सो इन दिस वे इट विल वर्क। और यदि मुझे व्यू को चेंज करना है, यूज़र नेम और यूज़र फ़ोन नंबर रखना है, ठीक है, बट लेआउट में थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, एंड दैट इज मे बी आई हैव टू ऐड मोर कंट्रोल्स, तो मुझे व्यू मॉडल को नहीं चेंज करना है बार बार, सिर्फ व्यू को चेंज करना है और कपलिंग्स करनी है, बाइंडिंग्स करनी है। ओके, दूसरा मेन फ़ायदा ये है कि आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो। यूनिट टेस्टिंग कैसे कर सकते हो? जैसे कि व्यू मॉडल है जिसमें आपने बिजनेस लॉजिक लिखा है, तो आपको व्यू को कॉल नहीं करना, डायरेक्ट व्यू मॉडल के अंदर लिखे फंक्शन को, क्लास के अंदर लिखे फंक्शन को यूनिट टेस्ट क्लास के अंदर कॉल करके उसमें इनपुट भेजना है और उसको चेक करना है। एक्ट we have a unit testing methods, right? Unit testing act arrange act and assert, तो डेटा आपको अरेंज करना है, उस पर लॉजिक लिखना है, ठीक है, और
स्पेसिफिक फंक्शन मेथड जिसको टेस्ट करना है उस पर एक्ट करना है, और क्या वैल्यू चाहिए वो वेरीफाई करना है, और वो सब यूनिट टेस्ट क्लास के अंदर लिखना है। तो कहने का मतलब है कि व्यू को विदाउट टच किए हम यूनिट टेस्ट कर सकते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ व्यू मॉडल। तो MVVM पैटर्न के ये दो बड़े फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग, यदि हम पढ़ें तो if an existing model implementation encapsulation existing business logic, it can be difficult or risky to change it. In this scenario, the view model acts as a adapter for the model class and prevents you from making major changes to the model code. Okay, developers can create unit tests for the view model and the model without using the view. The unit test for the view model can exercise exactly the same functionality as used by the view. The app UI can be redesigned without touching the view model and model code, provided the view is implemented entirely in XAML or C#. Therefore, a new version of the view should work with the existing view model. Design and developers, Designers and developers can work independently and concurrently on their components during development. Designers can focus on the view while developers can work on the view model and model components. The key to using MVVM effectively lies in understanding how to factor app code into the correct classes and how the classes interact. The following section discusses the responsibility of each of the classes in the MVVM pattern. So यदि हम व्यू की बात करें, the view is responsible for the defining the structure, layout and appearance of what the user see on the screen. ठीक है, .NET MAUI application view is typically a content page derived और content view derived class. ठीक है, तो जो भी पेज होता है और कंटेंट भी होता है वो आता है व्यू के अंदर. However, views can also be represented by data template. Data template एक काइंड ऑफ क्या होता है, प्री डिज़ाइंड. हमने बना दिया है कि सिर्फ मुझे यूज़र नेम और फ़ोन नंबर चाहिए, उसका एक टेम्पलेट बना रहा और जिस व्यू में चाहिए उस टेम्पलेट को कॉल कर दो, तो ये दो वैल्यू आ जाएगी, which specify the UI elements to be used to visually represent an object when it display. A data template as a view does not have any code behind and is designed to bind a specific view model type, avoiding enabling and disabling UI elements in the code behind. ठीक है, कोड behind में हमें enable disable UI elements नहीं करना चाहिए. Ensure that the view models are responsible for defining logical state changes that affect some aspects of the view display, such as whether a command is available or indication that an operation is pending. Therefore, enable or disable UI elements by binding to view properties rather than enabling or disabling them in code behind. View model. The view model implementations properties command to which the view can data bind to and notifies the view of any state changes through change notification event. The properties and commands that the view model provides defining the functionality to be offered by the UI, but the view determines how the functionality is to display. Keep the UI responsive with asynchronous function. Okay. Multi-platform apps should keep the UI thread unblocked to improve the user perceptions of performance. Therefore, in the view model, use asynchronous methods for input-output operation and raise event to asynchronously notify view of property change. The view model is also responsible for coordinating the view interactions with any model classes that are required. There's typically a one-to-many relationship between the view model and the model classes. The view model might choose to expose model classes directly to the view so that controls in the view can data bind directly to them. In this case, the model classes will need to be designed to support data binding and change notification event. Each view model provides data from a model in form that the view can easily consume to
To accomplish this, the view model sometimes performs data conversion. Placing these data conversions in the view model is good idea because it provides properties that the view can bind to. For example, the view model might combine the values of two properties to make it easier to display the view. Centralized data conversions in conversion layer. Okay. It also possible to use converters as separate data conversion layer that sit between the view model and view. This can be necessary, for example, when data requires a special formatting that the view model doesn't provide. In order for view model to participate in two-way binding with the view, its property must trace the property changed event. View model satisfies this requirement by implementing the INotifyPropertyChanged interface and raising the property changed event when a property is changed. For collections, the view-friendly observable collections is provided. The collection implement collection change notification, relieving the developer from having to implement the iNotify collection change interface on collections model. Model classes are non-visible classes that encapsulate the app's data. Therefore, the model can be thought of as a representing the app domain model, which usually includes a data model along with business and validations logic. Example of model objects include data transfer object, DTO, plain old CLR object, and generated entity and proxy object. Models class are typically used in conjunction with service or repository. See, model का use क्या है? Model class are typically used in conjunction with service or repositories that encapsulate data accessing and caching. Okay, connecting view models to view. कैसे करते हैं? View models can be connected to views by using data bindings capabilities of .NET MAUI. Okay, data binding capabilities. There are many approaches that can be used to construct views and view models and associated them at runtime. These approaches fall into two categories known as first composition and view model first composition. Choosing between view first composition and view model first composition is an issue of preferences and complexity. However, all approaches share the same aim, which is for the view to have a view model assigned to its binding context property. कल हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, व्यू टू हैव अ व्यू मॉडल असाइन, व्यू को हम व्यू मॉडल से असाइन कर सकते हैं थ्रू बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, सो प्राइमरी बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट है कि इजी कंस्ट्रक्ट लूजली कपल यूनिट टेस्टेबल एप्स बिकॉज व्यू मॉडल्स हैव नो डिपेंडेंसी ऑन द व्यू. मेन कंसर्न. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए दिस इज़ नॉट अवर मेन टॉपिक. ओके, तो थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को जो रिक्वायर्ड है जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ MVVM पैटर्न, मॉडल व्यू मॉडल. सो की व्यू मॉडल्स एंड व्यूज इंडिपेंडेंट. एक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MVVM पैटर्न क्या कहता है, व्यू और व्यू मॉडल को इंडिपेंडेंट रखता है. ठीक है, ओके, सी बाइंडिंग कांस्टेंट के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया. Okay, now back to our code, back to our topics. Design MVVM view model for .NET MAUI. So quick introductions. The MVVM model view model patterns is a software design pattern. यदि इंटरव्यू में पूछते हैं what is MVVM, तो आपको कहना है model view model pattern is software design pattern. Design patterns are set of rules and templates that help make application code better or more consistent. You use the
MVVM pattern to help separate the app's behavior logic from the user interface rendering code, and to do so in a way that support unit testing. Example scenario: say your company produce management software for human resource department. They use the software to manage and review details about the employee of company. The existing system is web-based. You were asked to create mobile app that can be used with the same backend APIs that the web system uses. You know that the backend APIs and web frontend are thoroughly converted by the unit test, and you want to maintain that standard for the mobile app. You heard that MVVM pattern can help design mobile apps for maximum testability, so you plan to try it out. MVVM itself is a design pattern, okay, that the basis of many framework and programming toolkits. Most of those frameworks also provided other things like navigations and messaging abstractions that help MVVM promote unit testing. In this discussion, you can concrete on the basis of the patterns because frameworks can widely vary in their implementation. In this module, you learn the part of MVVM pattern and responsibility of the model view and view model. Then you write code in view model that handles application behavior in a way which is isolated from the UI libraries, even from .NET MAUI itself. Okay, so ओवरऑल कहने का मतलब है कि MVVM एक डिज़ाइन पैटर्न है. दूसरी चीज़ MVVM सेपरेट करता है बिहेवियर एप्लीकेशन बिहेव लॉजिक को यूज़र इंटरफेस रेंडरिंग कोड से. दूसरी चीज़ है कि इट्स सपोर्ट टू यूनिट टेस्टिंग. So without touch view you can directly call the view model for testing purpose. लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो वन थिंग. एंड व्यू मॉडल को इंडिपेंडेंट करता है, सो डिज़ाइनर एंड डेवलपर कैन वर्क एट द सेम टाइम, ओके, विदाउट डिस्टर्ब टू ईच अदर. तो ये भी एक चीज़ है. सेपरेट सेग्रीगेशन है, क्लियर सेग्रीगेशन है. तो व्यू का कोड व्यू में, व्यू मॉडल का लॉजिक व्यू मॉडल में, तो ईजी टू अंडरस्टैंड. तो MVVM पैटर्न के कई सारे फ़ायदे हैं. So we'll see what is MVVM. .NET MAUI apps that don't use MVVM view model. Okay, .NET apps usually, okay, .NET apps that don't use MVVM generally have more code in their code behind files. The code behind files in .NET MAUI follows this pattern: somethings.xml.cs. Most code in the code behind file usually controls the user interface behavior. UI behavior can include anything that happens to the UI, like changing a color or some text. And it can include anything that happens because of UI, including button click handlers. One problem with this approach is that it's hard to write unit tests against code behind files. Code behind files often assume an application state created by parsing XML or even created by the other pages. These conditions are difficult to handle in a unit test runner that might not be running on a mobile devices, let alone with a user interface, so unit tests are rarely able to test the UI behavior in these files. But here where the MVVM pattern comes in useful. When used correctly, the MVVM pattern solves these problems by moving most UI behavior logics to unit testable class that are called view models. The MVVM pattern is mostly commonly used with frameworks that support data binding. With .NET MAUI, you can data bind each UI element to a view model and eliminate or nearly eliminate code in view or view code behind. What are the parts of an MVVM application? While the view model is unique part of MVVM pattern,
The pattern also defines a model part and a view part. The definition of these parts are consistent with some other common patterns such as model view controller. Model view controller. What is model? In an MVVM application, the term model is used to denote your business data and operation. The model does not involve itself with the app's user presentation. A useful rule for determining what code belongs in the model is that it should be portable across different platforms, from a mobile app to a web interface or even a command line program using the same model in all instances. It's unrelated to how the information is displayed to the users. When you think about the HR application from our scenario, the model might include an employee class and a department class that hold data and logic about those entities. The model could also include things like an employee repository class that holds persistent logic. Some other software design pattern would consider things like repositories as a separate from the model. But in the context of MVM, we often refer to any business logic or business data as a part of model. तो MVVM में क्या कहा जा रहा है कि जितना भी बिजनेस लॉजिक होता है या बिजनेस डेटा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ मॉडल. ओके. एंड व्यू मॉडल क्या होता है? व्यू मॉडल is like a bridge, it's like a connector who will update to view with the help of model. तो मॉडल से डेटा उठाता है, मॉडल से बिजनेस लॉजिक उठा के ओके व्यू को अपडेट करता है. ठीक है. और व्यू में यदि कोई इनपुट आता है, व्यू मॉडल को अपडेट करता है और व्यू मॉडल किसको भेजता है? सेव करने के लिए मॉडल को भेजता है. ठीक है. हियर आर टू एग्जांपल ऑफ अ मॉडल इन C#. हमने एक पब्लिक क्लास है एम्प्लॉय जिसके अंदर इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, एम्प्लॉय सुपरवाइज़र, डेट टाइम हायर डेट एंड एक फंक्शन है क्लॉक इन. दूसरी क्लास है एम्प्लॉय रिपोजिटरी जिसके अंदर में हमने कॉल किया है आई लिस्ट, एम्प्लॉय टाइप ऑफ आई लिस्ट, क्यूरी एम्प्लॉयज. ओके. व्हाट इज व्यू? The view code controls things that directly interact with the user, such as controls like button and entry fields, as well as purely visual elements like themes, styles, and fonts. In .NET MAUI, you don't have to write any C# code to generate a view yourself. Instead, you often define your views by XAML files. There are situations that call for a custom user control in which you create your own view through code. What is view model? That brings us back to view model. The view model is intermediary between our business logic and UI. बिजनेस लॉजिक जब भी बोले तो समझो ना मॉडल की बात हो रही है, और व्यू मतलब UI. तो यहाँ पे एक डायग्राम है. व्यू मॉडल के अंदर प्रेजेंटेशन लॉजिक होता है, व्यू के अंदर प्रेजेंटेशन UI होता है. ठीक है. जो माइंड होता है किससे? व्यू से. ठीक है. अब व्यू क्या करता है? यदि कोई डेटा हमने बाइंड किया व्यू से, उसको अपडेट करता है मॉडल को. यदि कोई इनपुट आ रहा है उसे अपडेट करता है मॉडल को, और मॉडल में कुछ चेंज होता है, डेटा में कुछ चेंज होता है बिजनेस लॉजिक में, वो नोटिफाई करता है व्यू मॉडल को, और व्यू मॉडल क्या करता है? व्यू को अपडेट करता है, देयर इज समथिंग चेंज. Think about a view model might do for the HR application. Let's say that there is a view that display an employee's available vacation time, and you want the vacation balance display as a 2 weeks 3 days 4 hours, but the business logic in the model provides that same values as 13.5 days, a decimal number representing the total days in 8 hours work day. The object model might look like the following list. Model: the employee class, which includes a method
public decimal get vacation balanced in days view model, an employee model class that has properties like okay employee model, private employee models for formatted vacations balance, and we call the method get vacation days in balance. ओके तो हमने एक मॉडल में क्या बनाया है, पब्लिक डेसिमल गेट वैकेशन बैलेंस इन डेज, सम मैथ दैट कैलकुलेट्स करंट वैकेशन बैलेंस। उससे हमने कॉल किया कहाँ से, व्यू मॉडल से, विद द हेल्प ऑफ मॉडल इंस्टेंस। ओके, अब इस व्यू जो फॉर्मेटेड वैकेशन बैलेंस है वो एक प्रॉपर्टी है, उसको कहाँ पे अपडेट किया, लेबल में, थ्रू विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट। ओके, समझ आ रहा है, क्लियर, कि मॉडल के अंदर हमने एक मेथड बनाया है गेट वैकेशन बैलेंस इन डेज, जिसमें हमने सब कैलकुलेशन किया, उससे हमने कॉल किया व्यू मॉडल के अंदर से विद द हेल्प ऑफ मॉडल इंस्टेंस। किस कॉल किया है और किसे अपडेट किया है, एक प्रॉपर्टीज़ को अपडेट किया है, और प्रॉपर्टी का नाम है फॉर्मेटेड वैकेशन बैलेंस। तो जब भी ये मैं फैच करूँगा कहाँ से, व्यू से हिट करूँगा, तो वो क्या गेट गेट मतलब रिटर्न क्या करेगी, गेट वैकेशन बैलेंस इन डेज रिटर्न करेगी। और ये लॉजिक कहाँ लिखा है, मॉडल में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, व्यू यू देन जस्ट नीड द बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर द पेज सेट एन इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मॉडल। अब व्यू को यदि ये कैसे कम्युनिकेट करेगा व्यू मॉडल से, उसके लिए आपको कोड बिहाइंड में क्या लिखना है, सिर्फ बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू व्यू मॉडल। ओके, सिंपल व्यू मॉडल से ये एसोसिएट हो जाएगा, कौन, व्यू। In this example, the model contains the business logic. This logic isn't bound to a visual display or device. You could use the same logic for a handheld device or desktop computer. The view knows nothing of the business logic. The view controls, like the label, know how to get text on the screen, but doesn't care if a vacation, okay, balance or random strings. The view model knows little of both words, so it can act as an intermediary. What's interesting is how the view model accomplishes being an intermediary. It exposes property to which a view, okay, with which a view can bind. Public properties are the only way view model provides data. A view model is so called because the model in MVVM represents the structure, data, and logic of business processes, while the view model represents the structured data, logic, and view requires. How does the view work with the view model? When you look at the relationships the view model has, the model, it's a standard class to class relationship. The view model has an instance of the model and exposes aspect of the model to the view through the properties. But how does a view get and set properties on the view models? When the view model changes, how does the view update the visual controls with the new values? The answer is data binding. The view model's properties are read at the time the object is bound to the view, but the binding has no way of knowing if the view model's properties change after the binding was applied to the view. Changing the view model doesn't automatically propagate the new values through the bindings to the view. To update from the view models to the view model must implement system.component.INotifyPropertyChanged interface. INotifyPropertyChanged interface declares a single event named property changed. Okay, it takes a single parameters, the name of the property that change its value. The binding system used in .NET MAUI understands this interface and listener to that event. When a property changes on the view model and raise the event, the binding notifies the target of the change. Think about how this relationship works in the HR application with an employee view model. The view model has a property that represents an employee.
such as the name of the employee. The view model implements the INotifyPropertyChanged interface and implement the name property changes, raise the property change events like this. तो यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया है एम्प्लॉय व्यू मॉडल, जिसको इनहेरिट किया है, इम्प्लीमेंट क्या किया है, इंटरफेस. ओके, इम्प्लीमेंट द आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज्ड इंटरफेस. उसके अंदर जो मेथड है वो कौन सा है, ऑन प्रॉपर्टी चेंज्ड, क्योंकि इवेंट है ये. और ये कब हिट होगा, जब आप क्या करोगे, नेम प्रॉपर्टी अपडेट करोगे. कोई वैल्यू आई सेट में और वो अपडेट हुई तो ऑन प्रॉपर्टी चेंज्ड हिट होगा. और ये ऑन प्रॉपर्टी चेंज जैसे ही हिट होगा, इसके अंदर में क्या है, एक इवेंट इन्वोक होगा, प्रॉपर्टी चेंज डॉट इन्वोक. किसको करेंगे, प्रॉपर्टी नेम को. ठीक है, ये इवेंट हैंडलर बनाया है, ये इन्वोक होगा. The name that describes the employee details contains a label controls which is bound to the view model's name property. Label text is equal to binding name. When the name property changes in the view model, the property changed event is raised. Property changed event is raised with the name of that property. With the name of that property. The binding listener to the event and then notifies to the label that name property is changed. So this will hit to the view. The label text property is updated with the latest value. Okay. So this is all about the MVVM. Check your knowledge. A developer is working on .NET MAUI application and wants to implement the MVVM patterns. They create a model for business data and operation and a view for user interaction. What should they create next to act as an intermediary between view and view? So view model. Our team is developing a mobile application using .NET MAUI and wants to ensure that their business logic is portable across different platforms. Where should they place this business logic in MVVM? Business logic model. Use a view model. It's the next topic. After learning about the components that makes up the view model, view model, model view model pattern, you probably found that model and view were easily to define. Let's explore how to use the view model to define its role in the pattern. Expose properties to the user interface. पहला काम. As in the previous example, view models usually rely on models for most of their data and any business logic. But it's the view model that formats, converts and enriches the data in whatever way the current view requires. कहने का मतलब है कि पहली चीज़ कि व्यू मॉडल डिपेंड करता है किस पे, मॉडल पे, किसके लिए, डेटा और लॉजिक, बिजनेस लॉजिक. अब व्यू मॉडल क्या करता है, अकॉर्डिंग टू व्यू डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, कन्वर्ट करना है कि नहीं, मतलब स्ट्रिंग को इंट में या डेसिमल में, नंबर्स में, और स्ट्रिंग को किसी अन्य डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा. और भी कई तरीके से कस्टमाइज़ करना है आपको डेटा अकॉर्डिंग टू दी करेंट व्यू रिक्वायरमेंट्स, तो वो व्यू मॉडल करेगा. ठीक है, फॉर्मेट बाय यूजिंग अ व्यू मॉडल. You already saw an example of formatting with the vacation time. Date formatting, characters encoding and serializations are all examples of how view models might format data from the view models. Convert by using view models. Often the models provides information in direct way, but the view model can fix that. For example, suppose you want to show on screen whether an employee is a supervisor, but our employee model doesn't tell us that directly. Instead, you have to infer this fact based on whether the person has other
reporting to them, assume that the model has this property. तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई एम्प्लॉय आई लिस्ट टाइप की डायरेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है. इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी you can infer that employee isn't a supervisor. In this case, employee view model includes the property is supervisor that provides that logic. Okay, public bool is supervisor model dot directs dot any. यदि कोई भी डेटा है वो इस सुपरवाइजर में आ जाएगा. एनी क्या रिटर्न करता है? बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है. इट माइट बी ट्रू और इट माइट बी फॉल्स. एनी यदि कोई डेटा है तो ट्रू, यदि कोई डेटा नहीं तो फॉल्स. Entries by using a view model. Sometimes a model might only provide an ID for related data, or you might need to go to the several models class to correlate the data required to a single screen. हो सकता है कि आपके स्क्रीन में एम्प्लॉय डिटेल्स है, एम्प्लॉय सैलरी है और एम्प्लॉय वर्क कल्चर है. तो यहाँ तीन टेबल है. एक तो एम्प्लॉय एड्रेस चाहिए टेबल जो एम्प्लॉय डिटेल्स बताएगा. एम्प्लॉय सैलरी दिखाने के लिए सैलरी टेबल चाहिए. और एम्प्लॉय कल्चर, वर्क कल्चर मतलब क्या डेजिग्नेशन है, क्या वर्क है, तो उसके लिए एक वर्क ओके एक व्हाट वी कैन से डेजिग्नेशंस क्लास चाहिए या वर्क कल्चर क्लास चाहिए. तीन टेबल से डेटा लेके हमें एक व्यू को अपडेट करना है जो कि यहाँ पे हो रहा है. तो ये कौन करेगा? व्यू मॉडल करेगा. The view model provides an ideal place to perform this task as well. Suppose you want to show all the all the projects that an employee is currently managing. This data isn't part of employee models. It can access by looking the company projects model. Okay, our employee view models as always expose its work as public property. Okay, we'll see. So हमने एक active project लिया है. It's a type of enumerable which have a string enumerable. Okay, company projects dot all जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट हैं. उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? p डॉट ऑनर इज इक्वल टू मॉडल डॉट आई डी. यदि ये इक्वल है और एक्टिव है तो उस नेम को हम पिक कर लेंगे एक्टिव प्रोजेक्ट को. ओके, सो बेस्ड ऑन आई डी वी गेट दिस. तो हमें सिर्फ मॉडल आई डी दे रहा था. हमने क्या किया? कंपनी प्रोजेक्ट से ऑनर को कंपेयर किया उस आई डी से. हो सकता है कुछ लॉजिक हो इसका. ऑनर इज इक्वल टू दी सेम लाइक आई डी. यदि ये इक्वल है और एक्टिव है तो उस नेम को, उस प्रोजेक्ट के नेम को हम पिक करते हैं एज एक्टिव प्रोजेक्ट्स. यूज पास थ्रू प्रॉपर्टीज विद अ व्यू मॉडल. तीसरा काम है इसका. frequently a view model needs exactly the property that models provides. For those property the view models just passes the data through. तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है नेम विच इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग. उसमें सेट किया नेम इज इक्वल टू वैल्यू और गेट किया मॉडल नेम. तो ये एक तीसरा काम. सेट द स्कोप ऑफ द व्यू मॉडल. You can use a view model at any level where there is a view. A page usually has a view model, but so might subviews of the page. One common reason to nested view model is when the page display a collection view on the page, the list has a view model that represent the collections, such as employee list view model. Each element in the list is an employee model. So employee list view model, employee लिस्ट व्यू मॉडल के अंदर में हमने क्या बनाया? एम्प्लॉय व्यू मॉडल, एम्प्लॉय व्यू मॉडल, एम्प्लॉय व्यू मॉडल. तो यहाँ पे क्या है? यू कैन यूज़ अ व्यू मॉडल एट एनी लेवल. अ पेज यूजुअली हैज़ अ व्यू मॉडल बट सो might sub views of the page. Okay, one common reason for nested view model is when the page display collection view the page, the list has a view model that represent the collection, such as employee list view model. Each element in the list is an employee view model. It is also common to have a top level view model that holds data and state for the entire application but isn't associated with any particular page. Such a view are commonly used for maintaining the act item. Consider the collections view example that we just described. When the user select an employee row,
The employee represents the current item. If the user navigates to details page or selects a toolbar button while that the row is selected, the actions or display should be for that employee. An elegant way of handling the scenario is to have the collection view dot selected item data bound to property that the toolbar or details page can also access. Putting that property on central view model works well. Identifying when the reuse view models with views. How you define the relationship between the view model and between the view models and view is detected more by the application requirement than by rules. The view model purpose is to provide to view the structure and data that it needs. That purpose should guide decisions about how big to scope a view model. View models closely reflect to the structure of a model class and they have one-to-one relationship with that classes. You saw an example is earlier with the employee view model that traps and augmented a single employee instance, but isn't always one-to-one relationship. If the view model is designed to provide the view's needs, you might instead end up with something like a chart dashboard view model to give an overview of HR department, which has no explicitly relationship with any models but can use from any models class. Similarly, you might find the view models and views often have a one-to-one relationship but not always. Okay, let's again think about collection views that shows a row of each employee. But you select one of rows, you can go to the employee details page. The list page has view model with a collection. As suggested earlier, the collections could be a collection of employee view model object. And when the user selects a row, employee view model instance could be passed to the employee details page. And the details page could use the employee view model as a binding context. The scenario might be excellent opportunity for view model reuse, but keep in mind the view models are intended to provide what the view needs. In some cases, you might want separate view models, even if they are all based on the same models class. In this example, the collections views rows are likely to intend much less information than the full details page. If retrieving the data from the details page adds too much overhead, you might want to have both employee list row view models and employee details models that service these respective views. View model object binding. Using a base class that implements INotifyPropertyChanged means that you don't need to re-implement the interface on every view model. Okay, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था MVVM toolkit library part of .NET community. Toolkit is a collection of standard self-contained lightweight types that provides starting implementations for binding models apps using MVVM. Instead of writing your own view model base class, you inherit from the toolkit ObservableObjects class, which provides everything you need to view model base class. The employee view models can be simplified from. Okay, हमने view model लिया, I notify property changed implement किया, event बनाया, event को invoked किया with the help of on property changed. ये हमने पढ़ लिया था. अभी इस कोड को कैसे चेंज करेंगे, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है. आपने प्रॉपर्टी सेम बनाई, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेट किया नेम. बस आपको यहाँ लिखना सेट प्रॉपर्टी, उसके अंदर रेफरेंस पास करना है नेम का विच इज़ प्राइवेट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करनी है. Okay, we don't need to write this bottleneck codes. This is simple. So observable object will comes through the MVVM toolkit library, which is part of .NET community toolkit.
The code can be further simplified by using source generator provided by .NET MAUI toolkit. By making the class partial and adding the observable property to the private variable, the property name is generated with the appropriate property change notification. अब जैसे ये observable object है, private name पर हमने क्या लिख दिया, observable property. That's it. The MVVM toolkit is distributed through the community toolkit.mvvm NuGet package. Check your knowledge. When you use the MVVM pattern with .NET MAUI, your model view and ViewModel aren't decoupled complete from each other, which choice describes one common dependency between the MVVM pieces. The view model has direct knowledge of the model. The model has direct knowledge of the model. The model has direct knowledge of the view. Okay. So view model has a direct knowledge of the view. Correct. Which is the most likely. Which is the most likely to tightly coupled to the platforms and difficult to create unit test for model, view and view model. View model. Model होना चाहिए वैसे. Okay, just a minute. The most likely to be tightly coupled. So view in the .NET, the view is primarily implemented in XAML, but it's difficult to unit test even if coded. Okay. The view model can access property and methods on model directly. The view model can access properties methods on model directly. Okay. Unit. The next unit is exercise manage selections by using view model. Manage selection by using ViewModel. For our exercise, we briefly leave behind the example of human resource app. Instead, we work with an application that lists movies that already has coupled pages, view models that have some basic bindings. The two pages are a list page and detail page. We modified the selection logic so that the collection view and the details page uses the same view model property. Okay, this module uses .NET 10 SDK. Okay, तो हम बात करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मूवी व्यू मॉडल बनाएंगे. Let's open the application. Close all. तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया पेजेस, मॉडल एंड व्यू मॉडल्स. तो एक एक करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो एग्जांपल हम ले रहे हैं मूवी का ले रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूवी का मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें टाइटल, स्टूडियो, डायरेक्टर एंड ईयर है. ठीक है, एज ए रिकॉर्ड हम इसे ले रहे हैं. एक डेटाबेस बना लेते हैं जो data.json से रिक्वेस्ट को पुल करेगा और पुल करने के बाद इस स्ट्रीम को डीसीरियलाइज करके रिटर्न कर देगा जब भी हम गेट मूवी कॉल करेंगे. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉडल्स. पेजेस की बात कर लेते हैं. तो पेजेस में हमने दो क्लासेस बनाई है. एक बनाया है मूवी डिटेल्स पेज. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि हमने बनाया है लेबल जैसे टाइटल, ईयर, स्टूडियो, डायरेक्टर और उसको बाइंड कर दिया है. तो ये है लेबल और ये है डिस्प्ले वैल्यू. एक मूवी लिस्ट पेज बनाया जिसके अंदर लिस्ट आएगी. ठीक है, तो लिस्ट किस फॉर्म में आएगी कि कलेक्शन व्यू में मूवी लिस्ट को पास किया और सेलेक्टेड आइटम किया है. सेलेक्टेड मूवी, जो भी हम सेलेक्ट मूवी करेंगे इट विल बी नेविगेट. ओके, सो डेटा टेम्पलेट में हमने टाइटल शो करेंगे एज अ लिस्ट. वंस जब हम टाइटल पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू द डिटेल्स पेज. ओके, डिटेल्स पेज में जाएगा यहाँ पे. ठीक है, डिटेल्स पेज में सिर्फ आपको लेबल दिखेगा, टाइटल, ईयर एंड
डायरेक्टर का। अब व्यू मॉडल की बात कर लेते हैं। तो व्यू मॉडल में हमारे पास दो व्यू मॉडल है। वन इज़ फॉर शो द लिस्ट, लिस्ट को शो करने के लिए जो मॉडल हमने बनाया वो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल कलेक्शन व्यू मॉडल का, ठीक है, उसको हमने बाइंड कर दिया मूवी से, प्रॉपर्टीज़ मूवी। तो जैसे ही ये पेज लोड होगा, ऑब्जर्वेबल कलेक्शन यूज हिट होगा मूवी का, और ये मूवी में डिस्प्ले होके पेजेस में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मूवीज़ कहीं लिखा होगा, ये इसमें दूसरा है। और उसके अंदर हमने रिफ़्रेश मेथड ले लिया। जब भी हम पुल टू रिफ़्रेश करेंगे तो ये हिट हो जाएगा। तो पुल टू रिफ़्रेश तो लिखा नहीं है, बट हम उसको यूज़ कर सकते हैं पुल टू रिफ़्रेश कोड में। तो इसको हमने कहाँ से यूज़ किया है, इसको हमने यूज़ किया app.xaml.cs। तो जैसे ही ऐप लॉन्च होगा, विंडो क्रिएट विंडो मेथड हिट होगा, उसके अंदर में हमने रिफ़्रेश मूवीज़ को हिट कर दिया, ठीक है। और डिलीट को हमने कॉल किया है जब भी एप्लीकेशन, ओके, कलेक्शन व्यू हिट होगा या मूवी मेन्यू आइटम क्लिक को हम क्लिक करेंगे तो डिलीट मूवी, वी कैन डिलीट द मूवी ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमने मूवी क्लिक इवेंट इसमें यूज़ नहीं किया है फ़िलहाल के लिए, तो वो हिट नहीं होगा, ठीक है। ये इवेंट का कोई अभी यूज़ नहीं है, डिलीट। अभी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं एप्लीकेशन को। तो हमें मूवी लिस्ट पेज दिख रहा है, ठीक है, और ये दिख रहा है बिकॉज ऑफ पेज के कारण। टाइटल, पूरे टाइटल, जैसे ही मैंने होम अलोन को किया तो ये डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेजेस हैं, यहाँ पे टोटल 2 पेजेस हैं। एक बार चेक कर लेते हैं तुरंत, यहाँ पे कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं। जस्ट अ मिनट, गो टू द पेजेस। तो ये जो मूवी लिस्ट पेज आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। कलेक्शन व्यू है, दिस इज़ कलेक्शन व्यू। उसके अंदर में हमने जो डेटा टेम्पलेट यूज़ किया टाइटल, तो सिर्फ टाइटल दिखा रहा है यहाँ पे। हम इसकी जगह यदि स्टूडियो लिखता हूँ तो ये यहाँ पे स्टूडियो का नाम आ गया। यदि मैं यहाँ पे और क्या था, टाइटल डायरेक्टर था, आई थिंक डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर लिखा तो डायरेक्टर के नाम आने लगे। तो ऑब्वियसली कि मुझे किसी डायरेक्टर को सेलेक्ट करना है तो थ्रू आई कैन डू दैट। फ़िलहाल के लिए हम टाइटल दिखा रहे हैं बैटमैन। जैसे बैटमैन में क्लिक करूँगा तो इट विल टेक यू टू द सिलेक्शन पेज। लेट मी रिस्टार्ट द एप्लीकेशन। सो इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि यूज़ कमांड्स इन व्यू मॉडल्स। तो काफ़ी इजी है। सो कमांड को कैसे यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ चुका है कि यदि हम कोड बिहाइंड नहीं लिखना चाहते कोड को, और जो कि अप्रोप्रिएट भी नहीं है, मॉवी रिकमेंड करता है कि यूज़ द कमांड हैंडलर। तो कमांड के अंदर ऑब्वियसली हमें यूज़ करना है बाइंडिंग्स को। बाइंडिंग्स से हमें कमांड को कॉल करना है, जो कि हमें लिखना होगा व्यू मॉडल के अंदर। कमांड को क्या लिखना है, तो यूजिंग अ टू वे बाइंडिंग्स, ओके। सो टू वे बाइंडिंग्स मीन्स इट विल बी फ्रॉम UI to व्यू मॉडल्स एंड व्यू मॉडल्स टू UI, वाइस वर्सा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था स्विच टॉगल, स्लाइड लोडर वैल्यूज़। तो ये सब क्या थी, व्यू टू व्यू मॉडल को अपडेट करते थे, और व्यू मॉडल से व्यू को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कमांड है क्लिक बटन, ओके। क्लिक बटन क्या करता है, हम व्यू से व्यू मॉडल को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो क्लिक द बटन, वी कैन यूज़ इट, बट हमें यहाँ क्लिक कमांड यूज़ नहीं करना है। हमें क्या यूज़ करना है, कमांड, और उसको एक बटन के रूप में यूज़ करना है, गिव बोनस कमांड, ओके। अभी क्या करेंगे, गिव बोनस कमांड को सबसे पहले इनिशिएट करना है एज अ टाइप ऑफ आई कमांड, ओके। आई कमांड क्या है, एक इंटरफेस है, ओके। आई कमांड इंटरफेस एज एन एग्जीक्यूट मेथड, उसमें एक एग्जीक्यूट मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड व्हेन द बटन इज प्रेस्ड।
Okay, the full iCommand interface has two methods, can execute and can execute changed. Okay, that are used to determine a control should appear enabled or disabled. Okay, iCommand के अंदर दो मेथड है, can execute and execute. Okay, and event handler है can execute changed. Use the command class. तो उसके लिए क्या करना है, आई नोटिफाई प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट किया हमने, आई कमांड से हमने प्रॉपर्टी बनाई एंड उसे हमने क्या किया है, उस कमांड को इम्प्लीमेंट किया, आई कमांड दिस क्लास इम्प्लीमेंट द आई कमांड. ओके, वी कैन इम्प्लीमेंट द गिव बोनस. ओके, property described earlier entered within the overview models. So give bonus command is equal to new command, उसके अंदर में execute method and give bonus can execute. दो methods को हमने कॉल किया, logic for giving bonus and logic for deciding if give bonus. Okay, simplify the MVVM toolkit. तो अभी ये सब ना लिख के हमने क्या किया, सिंपल ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट लेना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, रिले कमांड कैन एग्जीक्यूट, गिव बोनस कैन एग्जीक्यूट, हमने डायरेक्ट रिले कमांड का यूज़ कर दिया. So MVVM toolkit library contains the implementations of I command known as relay command. Okay, and async relay command. It also supplies source generator to simplify this code further. In this following example, give bonus command, okay, will generate a string settings both the method to call the execute to call to see if the can execute. The relay command attribute is used on give bonus method and it will generate the give bonus command. Additionally, by setting the can execute property on the attribute to name of the method, we want to hook up the can execute method of the I command. Okay, तो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें रिले कमांड इज अ टाइप ऑफ आई कमांड. जब भी वो एग्जीक्यूट होगा गिव बोनस कैन एग्जीक्यूट को हिट कर देगा, ठीक है, और उसको रिटर्न ट्रू दे देगा जो भी है. MVVM toolkit also handle async method. Okay, commands with parameters. क्या है command with parameters? तो command with parameters में जैसे give command डाला, उसमें give parameters 25 डाल दिया. अब जब भी command को hit करेंगे, ठीक है, तो parameters भी आएगा उसके साथ, ठीक है. कुछ खास नहीं है, यदि आपको कोई वैल्यू चाहिए कमांड हिट करने में, कमांड हिट करते समय, तो उसमें पैरामीटर डाल दो, दैट्स अ वैल्यू. If the command parameter is bound to the incorrect type, apply converter to convert to value. यदि हो सकता है कई बार ये वैल्यू उसके अनुरूप ना हो तो आई कन्वर्टर के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं कमांड पैरामीटर से आई कन्वर्टर लगाकर, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन वे. Check your knowledge. What is the purpose of I command? Okay, it allows to create the custom event handler. It enables binding of your interaction to properties to expose this interface, maintaining separation of your behavior from your implementations. It allows the creation of custom classes for each handler. It used to handle clicked and selected events in code window. Binding instructions. Yeah. How can the command or command generic command classes simplify the uses of command? The implement I command, avoiding the need of creating separation class for each command. They enable the use of I command without any type checking. They allow for the creation of multiple I command instances for each event handler. What is the role of command parameters? Is used to bind the icon. It's allows of passing the parameter command to command involved. Okay, I think the last one is correct. The first one, the command classes implement I command simplify using. Okay, how can I? How can the command class simplify the use of I command? They implement I command, avoiding the need to create separate class for each command. They implement I command. Okay. Convert to an event handler. So event in this example, so back to movie list app. Okay.
download another application. Fine. What is that? Convert an event handler to a command. Event handler कहीं पे लिखा था event handler, हमने उसको कमांड में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना होगा? जैसे मीनू इवेंट हैंडलर लिखा था, मीनू इवेंट क्लिक्ड, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले कमांड बना देंगे. कमांड बना के मूवी से मूवी व्यू मॉडल कमांड इंस्टेंस को पास कर देंगे. और जब भी हमें कमांड हिट करना है डिलीट मूवी, विल बी यूज दिस एक्स स्टैटिक्स लोकल ऐप डॉट व्यू मॉडल एंड हिट कर देंगे. यहाँ पे ऐप डॉट व्यू मॉडल मतलब क्या है कि हमने ऐप लेवल पे इसका इंस्टेंस पास किया एंड डिलीटेड बाइंडिंग पैरामीटर्स. एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कोड में. हमने कोड बिहाइंड लिखा, राइट. यदि हम क्लिक करेंगे तो ये सब हमने कोड बिहाइंड लिखा. पुश स्वैप आइटम, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्वैप आइटम लेना पड़ेगा. पेस्ट कर देते हैं जल्दी से है इसके अंदर. ये कोड था, मतलब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं इसको. देखिए स्वैप हो रहा है. डिलीट. तो ये तो स्वैप लगाने से काम कर रहा है. नाउ वी विल चेंज इनटू द कमांड. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक आई कमांड बनाना पड़ेगा मूवी लिस्ट व्यू मॉडल में. विल गो विथ व्यू मूवी लिस्ट व्यू मॉडल वेयर विल पेस्ट आई कमांड. कर लेते हैं यूजिंग इनपुट और विंडोज इनपुट. कौन सा लेना है? सिस्टम कलेक्शन ऑब्जेक्ट मॉडल सिस्टम विंडोज इनपुट होगा. सिस्टम विंडोज इनपुट. अब इसको कॉल करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर से. कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है. और डिलीट व्यू मॉडल हमने यहाँ लिखा रखा है. अभी नेक्स्ट स्टेप है स्वैप कमांड. स्वैप आइटम कहाँ पे लिखा है? पेजेस के अंदर. स्वैप आइटम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. उसमें क्या करना है? कमांड. तो इतना सब ना लिख के सिर्फ इतना लिखना है. स्वैप कमांड स्वैप आइटम है ये जो है इसको इतना, ठीक है. और रन दी एप्लीकेशन. कोड बिहाइंड वाला काम नहीं इसमें कुछ भी. कोड बिहाइंड रेफरेंस 0. स्वैप किया.
डिलीट किया, सेव किया, डिलीट। अभी डिलीट कहाँ से हो रहा है, विल सी। बैक टू दिस, should come here, delete command, this is delete command, command MOVI delete, come, delete is coming. So in this way we can remove the code behind code, okay, और कमांड की हेल्प से, हाई कमांड की हेल्प से हम लॉजिक को लिख सकते हैं व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल और करेंगे इन फ्यूचर्स तो उस समय हम सिर्फ कोड पे ज़्यादा ध्यान देंगे इंस्टेंट ऑफ थ्योरी। फ़िलहाल के लिए हम दोनों साथ लेके चल रहे हैं, बट द नेक्स्ट वीडियो, ओके, once we done all units, we'll just randomly pick few applications, work on it practically live, okay, और उसको चेक करेंगे क्या क्या बॉटलनेक्स आते हैं वाइल डेवलपमेंट द कोड। फ़िलहाल के लिए ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होता है, डिज़ाइन एंड MVVM व्यू मॉडल्स फॉर .NET MAUI। Okay, so next video we will learn the design consistent .NET MAUI XAML page by using shared resources. तब तक के लिए thank you, and please subscribe this channel and like this video. Thank you so much.